श्रीमन्नारायणीयं दशकं 67 स्फुरत्परानन्दरसात्मकेन त्वया समासादितभोगलीला असीममानन्दभरं प्रपन्ना महान्तमापुर्मदमं भुजाक्ष्यः निलीयते सौ मयि मय्यमायं रमापतिर्विश्वमनोभिरामः इति स्म सर्वा कलिताभिमाना निरीक्ष्य गोविन्द तिरोहितो भू राधाभिधां तावद जातगर्वाम् अतिप्रियां गोपवधूं मुरारे भवानुपाधाय गतो विदूरं तया सहस्वै रविहारकारी तिरोहिते तत् वै जाततापाः समं समेता कमलायताक्ष्यः वने वने त्वां परिमार्गयन्त्यो विषादमापुर्भगवन्नपारम् हाच्यूतः चम्पककर्णिकार हा मल्लिके मालति बालवल्यः किं वीक्षितो नो हृदयैकचोर इत्यादितास्त्वत् प्रवणा विलेपुः निरीक्षितोऽयं सखि पङ्कजाक्षः पुरो ममेत्याकुलमालपन्ती त्वां भावना चक्षुषि वीक्ष्य काचित् तापं सखीनां द्विगुणी चकार त्वदात्मिकास्ता यमुना तटान्ते तवानुचक्रुः किल चेष्टितानि विचित्य भूयोऽपि तथैव मानात् त्वया विमुक्तां ददृशुश्च राधाम् ततः समं ता विपिने समन्तात् तमोवतारावधि मार्गयन्त्यः पुनर्विमिश्रा यमुना तटान्ते वृषं विलेपुश्च जगुर्गुणांस्ते तथा व्यथा सङ्कुलमानसानां प्रजाङ्गणानां करुणैकसिन्धो जगत्त्रयी मोहनात्मा त्वं प्रादुरासीरयि मन्दहासी सन्दिग्धसन्दर्शनमात्मकान्तं त्वां वीक्ष्य तन्व्य सहसा तदानीं किं न चक्रु प्रमदातिभारात् सत्वं गदात् पालय मारुतेश श्री हरये नमः श्री पोन्नु गुरुवायूरप्पने शरणं श्री चोटानिक्करे भगवती अम्मये शरणं आनंद चिन्मयने शरणं नारायण अखिल गुरो भगवन्नमस्ते सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद।